the next basic our thing that we need to understand is something called Android lifecycle. Android lifecycle defines how an Android application is being executed and is being run within your Android phone. In terms of it's a cycle. Okay, so as you know, when we work with applications, there are various different stages and various different phases in which each application is being processed, which technically we term in terms of its life cycle. If you're here for the first time, please don't forget to visit my page and subscribe this channel. You will find that on my channel there are more than 500 video lectures based on PHP, mail scripting, Maya embedded language, 3D graphics, from developing HTML, CSS, JavaScript to working on Android, Photoshop, multimedia technology, and so on and so forth. So these tutorials will be very helpful and very productive for you. So don't forget to subscribe, hit that bell icon, and receive notifications regularly. So Android app, when we start an app, when we launch an app, there are various different cycles that each app goes through. So for example, when you start an app, that's called starting an app. But when an app starts in a mobile phone, we know that we can minimize that app. When we press a home button, technically app it gets minimized, but app is still running. So what is that stage? We again click on that app, it comes back into the view at the same point. What is that stage? We click on multitasking and then multiple apps appear. Then what should happens at that moment when we press a multitasking? Is my app running or is it in paused state? Then I select another app. What happens then? What happens to my previous app? So this is something that we refer to in terms of what we call life cycle of our mobile apps. So we need to understand that a little bit, that what is the basic life cycle of our mobile apps and how these apps are basically being used. Okay. Now, when we talk about the life cycle, there is a small concept that we need to understand. So now, basically, what we say in terms of life cycle is that each life cycle of an Android app is considered as a stack of apps. A stack of apps are basically meaning that you have multiple books on top of each other, or what we refer to as stack of cards. जैसे ना ताश के पत्ते एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए होते हैं, या किताबों का ढेर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टैक किया हुआ होता है. Similarly, apps are considered as being stacked on top of each other when they are in your mobile phone in a running state. ठीक, जब आप एक ऐप खोली, फिर उसको मिनिमाइज किया, दूसरी ऐप खोली, तीसरी ऐप खोली, फोर्थ ऐप, फिफ्थ ऐप, सिक्स्थ ऐप, सेवंथ ऐप, एंड यू आर ब्राउजिंग थ्रू मल्टीपल ऐप्स, नोटिफिकेशन आई, व्हाट्सएप पे गए, फिर फेसबुक पे गए, फिर ट्विटर पे गए, फिर इंस्टा पे गए, फिर मिनिमाइज किया, फिर आपने कोई दूसरी ऐप खोली, ईमेल चेक की, देन एसएमएस पे गए, फिर कॉल पे गए, फिर व्हाट्सएप पे आए. So you have multiple apps at this time. How are these maps organized? Technically, we consider them being stacked on top of each other. So once you are running Android, for example, a WhatsApp app, then you get a notification and you open a Facebook app. So that app comes on top of that app. Similarly, now you have Facebook on top, and then you get a notification from your Instagram. So you open Instagram. So that Instagram now comes on top of your Facebook. So you are viewing Instagram, but the Facebook is also in the running state. So that's why we say that your apps are basically stacked on top of each other when you are working in terms of Android. Okay. Within that Android, basically we say there are four main activities that are considered that we use. The first activity is the running state, that your app is running. You clicked on Android, your Android is being visible. That is considered as a running state. Your आपकी app जो है वो basically चल रही है, run कर रही है. ठीक है. ये पहला एक state है. उस स्टेट के बाद दूसरा स्टेट हमारे पास आ जाता है पॉज्ड स्टेट. ओके, दैट पॉज स्टेट इंडिकेट्स योर के आपने उस ऐप को पॉज कर दिया. मींस कि वो उसकी एक्टिविटी रन नहीं कर रही, उसके बैकग्राउंड जो इवेंट्स हैं वो ट्रिगर नहीं हो रहे, वो पॉज स्टेट में आ गया. अब ये पॉज स्टेट में कब आता है? यूजुअली जब आपने एक ऐप देख रहे हैं और फिर आपने मल्टीटास्क विंडो की, तो वो जो स्टैक्स आपके एक मल्टी विंडोज के स्टैक आ जाता है, तो वहां पे आपकी ऐप पॉज स्टेट में चली जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वॉचिंग ए यूट्यूब वीडियो, तो आपकी वीडियो चल रही है, सडनली आपने क्या किया, नोटिफिकेशन आई, आपने ऐप को स्विच किया, तो वो वीडियो आपकी पॉज स्टेट में चली जाती है. ठीक है, तो वो आपकी कहलाती है पॉज स्टेट. इसीलिए वो वीडियो स्टॉप हो जाती है, रन नहीं होती, वहीं पे रुक जाती है. फिर आपने वापस यूट्यूब पर आए तो वो रनिंग स्टेट में चली जाती है. देन थर्ड स्टेट इज कॉल्ड व्हाट वी रेफर टू एज स्टॉप्ड स्टेट. ठीक है, स्टॉप्ड स्टेट बेसिकली हमारे पास कहलाती है कि स्टेट व्हेन योर एप्लीकेशन हैज स्टॉप्ड वर्किंग. ओके, इट्स नो लॉन्गर एक्टिव इन योर बैकग्राउंड और इन योर फोरग्राउंड. आपकी ऐप है, मौजूद है, बट इट्स नॉट इन द रनिंग स्टेट, इट्स नॉट इवन इन पॉज स्टेट, वो स्टॉप हो चुकी है.
ठीक, however it is not in a destroy mode. Okay, there is a killing process. There is a process in which we say that your app has been destroyed, killed or taken off from memory. ठीक है, बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जो आपकी बैकग्राउंड में चलती है. फॉर एग्जांपल फेसबुक ऐप, टेक्निकली उसकी नोटिफिकेशन का जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअसली चल रही होती है. व्हाट्सएप ऐप, उसकी ऐप इटसेल्फ नहीं, उसकी नोटिफिकेशन एक्टिविटी चल रही होती है कि बैक एंड पे इट इज रिसीविंग न्यू मैसेजेस एट द कांस्टेंट टाइम, इसलिए हमें नोटिफिकेशन आ रहा होता है. ऐप आपने हालांकि मिनिमाइज करके बंद भी की हुई हो, उसको आपने स्वैप करके क्लोज भी कर दियो, स्टॉप भी कर दियो, लेकिन उसकी एक नोटिफिकेशन एक्टिविटी अलग है जो कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड पर रन कर रही होती है. सिमिलरली यूट्यूब हो गया. लेकिन इसी तरह से बैंक की कुछ एक्टिविटीज हैं, या फॉर एग्जांपल ऐसी बहुत सारी एप्स हैं दैट आस्क यू कि अगर आप उसको क्लोज करोगे तो वो ऐप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मेमोरी से भी ऑफ हो जाएगी और उसकी कोई एक्टिविटी रनिंग में नहीं जाती. ठीक है, तो वो मेमोरी नहीं लेती है. तो देयर आर सर्टेन एप्स दैट डू रन इन द बैकग्राउंड, हाउएवर देयर आर एप्स एज वेल दैट डू नॉट रन. फॉर एग्जांपल बैंक्स की हो गई, मोस्ट सिक्योर एप्स हो गई, गेम्स हो गई अक्सर, तो वो उनकी नोटिफिकेशंस की ऐप भी एक्टिविटीज नहीं होती एडिशनल, और उसकी सारी एक्टिविटीज किलिंग स्टेट में चली जाती है. तो रन हुआ, पॉज हुआ, स्टॉप हुआ और डिस्ट्रॉय हुआ, ये चार मेन स्टेट्स हैं जिसमें हमारी ऐप गुजरती है जब आप मोबाइल पे बात करते हो. तो जब आप मोबाइल पे काम कर रहे हो तो डू रिमेंबर कि इट्स नॉट ओनली कि यार ऐप स्टार्ट की और बंद की. मोबाइल में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्टार्ट खोली और ऐप बंद की. मोबाइल में कॉन्सेप्ट है कि ऐप रन में गई, पॉज में गई, स्टॉप है. स्टॉप का मतलब ये कि आप फिर उसको रन में लेके जा सकते हो, वो मेमोरी में शायद अभी भी मौजूद है. ठीक है, स्टॉप का मतलब कि वो स्टिल रनिंग स्टेट में आ सकती है. डिस्ट्रॉय का मतलब ये कि आपने उसको डिस्ट्रॉय करके मेमोरी से ऑफ करके शट डाउन कर दी ऐप को, ऐप बंद हो गई, अब फिर वो उसको रिस्टार्ट आपको करना पड़ेगा, पूरा ऐप को री रन स्टेट में लेके आना पड़ेगा. इसी चीज को कंप्लीटली हमने लाइफ साइकिल के अंदर दिया हुआ. ठीक है, वही लाइफ साइकिल हमारे पास यहाँ पर आ जाती है. नाउ दिस बेसिकली इज अ सिंपल लाइफ साइकिल दैट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द कोड लेवल. यार ये जो अभी हमने बात की, रन, पॉज, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय, यही इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ कोड में कैसे हम, और उसकी कोड का साइकिल कैसे चल रहा है. यहाँ पे कहता है कि जब एक्टिविटी लॉन्च, एक्टिविटी अगेन वी आर रिफरिंग टू इन टर्म्स ऑफ ए मोबाइल ऐप, दैट व्हेन यू क्लिक ऑन अ मोबाइल ऐप दैट्स एन एक्टिविटी. वंस यू स्टार्ट दैट एक्टिविटी, सबसे पहले इट क्रिएट्स ऑन क्रिएट इवेंट. ओके, द फर्स्ट थिंग इट डज इज इट गोस इनसाइड इट एंड क्रिएट्स एन ऑन क्रिएट इवेंट. ऑन क्रिएट, अब दिस इज द फंक्शन दैट इज बाय डिफॉल्ट मौजूद इन योर main activity.java file. Okay, if you go inside your main activity.java file, you will find this method there automatically. This is the first method that gets executed. So once you click on your app, the first thing that gets executed is called onCreate event. So if you need to do any background checks, any background activity, anywhere user validation, verification, system requirement check, this is where we do it. That before your app is created, or once the app is created, before it goes in the running state, before it goes inside a running state, your app checks a pre-valued evaluation of the system or some predefined calculations. For example, if it needs to connect to the internet, if there is no internet and your app requires that it should be connected online, there's no point starting the app. So we do a background check that is there internet, Wi-Fi or 3G available. If there is no internet available, we give the user to message this app requires internet to run, for example. So shut down at the right moment. So before you even start your processes, we check the internet and we close it. We can do that on create. So as soon as it creates, first do this validation. If the internet is available, then go and start the app. If there's no internet, just shut down the app, kill the process. Got it? So this is what we basically mean by life cycle, that we understand various different stages of an app. And so we can do various different controls and processes based on user requirements and user specifications at that particular level. So after on create, a method called onStart executes. On create हो गया, on create के बाद जो अगला मेथड एग्जीक्यूट होता है हमारे पास वो on start है. अब अगेन यहाँ पे आपकी ऐप रनिंग स्टेट में आ जाती है, जो पहला स्टेज था हमारे पास, तो फर्स्ट स्टेज रनिंग में है, तो वो यहाँ पे स्टार्ट का मेथड कॉल होता है. अब आपकी ऐप स्टार्ट हो चुकी है, यूजर को नजर आ रहा है, और उसकी ऐप की सारी लोडिंग वोडिंग जो हम कर रहे होते हैं, या वैलिडेशन है, या अगेन बैकग्राउंड चेक है, या लॉग इन स्क्रीन हम दे रहे हैं पहले, तो हम सारा ऑन स्टार्ट पे आके बात करते हैं. फिर उसके बाद ऑन रिज्यूम है, ये भी एक इवेंट है हरूबरू का, पर बहुत काम का. ये इवेंट यहाँ पे रखा गया. जैसे ही आपने ऐप स्टार्ट किया, हमें ये तीनों चीजें मिलती हैं. ऑन रिज्यूम का मतलब है कि आपकी ऐप की फ्रंट एंड फोरग्राउंड एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है. नाउ रिमेंबर, देयर इज वर्ड कॉल्ड बैकग्राउंड एक्टिविटी, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड फोरग्राउंड एक्टिविटी. बैकग्राउंड मींस आपकी ऐप क्लोज्ड है लेकिन बैकग्राउंड में चल रही है. फॉर एग्जांपल फेसबुक की नोटिफिकेशन ऐप, कि फेसबुक आपने शट डाउन कर दिया, लेकिन बैकग्राउंड में फेसबुक की एक्टिविटी चल रही है जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ला रही है. व्हाट्सएप,
व्हाट्सएप फ्रंट एंड पे आपने बंद कर दिया, लेकिन बैकग्राउंड पे वो रन कर रही है उसकी नोटिफिकेशन ऐप एक्टिविटी, जो कि आपके लेटेस्ट मैसेजेस को चेक करी कि कौन से मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। तो वो एक एक्टिविटी है। इसी तरह से तो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। रिज्यूम इज बेसिकली मींस कि आपकी ऐप बैकग्राउंड में चल रही है, आप उसको रिज्यूम करके फोरग्राउंड में लेकर आ रहे हैं सामने की तरफ। तो बैकग्राउंड इज समथिंग, foreground is something. So certain apps do run in the background. Okay. For example, your calling app, your what we call your SMS app, what we call your 3G app, for what we call your WhatsApp Wi-Fi activities. तो Wi-Fi हुआ, 3G हुआ, आपकी कॉल हुई, कैलेंडर हुआ, आपका कॉन्टेक्ट्स हुए, ये एक्टिविटीज हैं जो आपने सामने से हटा दी, लेकिन बैकग्राउंड में वो स्टिल रनिंग स्टेट में। ठीक है, वो रन स्टार्ट मोड और रिज्यूम मोड उनका ऑन होता है, वो चल रही होती है। फिर एक्टिविटी आपकी रनिंग स्टेट में आ गई। उसके बाद आपने एक और इवेंट किया ऑन पॉज। ऑन पॉज का मतलब ये कि आपकी ऐप चल रही थी, आपने उसको पॉज कर दिया। ओके, बाय पॉज मीनिंग कि आपने, हम ऐप चला रहे हैं, हमने मल्टीटास्किंग विंडो पे क्लिक कर दिया। व्हेन वी क्लिक ऑन अ मल्टीटास्किंग विंडो, बाय दैट वी मीन कि नाउ योर ऐप हैज स्विच्ड टू मल्टीपल एप्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव स्टार्टेड मल्टीपल एप्स, ओके, तो मैंने एक ऐप स्टार्ट की, फिर मैंने इस ऐप को मिनिमाइज किया, फिर मैंने दूसरी ऐप स्टार्ट की, मेरी ऐप स्टार्ट हो गई, अब मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, फिर तो ये पॉज स्टेट में चलेगा। देन अगेन मैंने मल्टीटास्किंग पे क्लिक किया, तो नाउ आई कैन सी मल्टीपल एप्स। ऑल ऑफ दीज एप्स आर बेसिकली कंसिडर्ड इन अ पॉज स्टेट। ओके, ऑल ऑफ दीज एप्स आर बेसिकली कंसिडर्ड इन अ पॉज स्टेट। ये सारी एप्स मेरी जो है ये पॉज स्टेट में मौजूद है। ओके, सो एज सून एज आई क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर ऐप, वो ऐप वापस आपकी फ्रॉम द पॉज स्टेट कम्स बैक इनटू रेज्यूम स्टेट। That's why this stage is there. Start is executed initially that your app has started. After that, there is a method called onResume. This gets started when you pause the app. So at this moment, when we click on multitasking, my apps are in pause state. Similarly, I can click on the home button. Apps are all in a minimized manner. Apps are there, but they are minimized. Hence, they are again paused. They are again paused. So if I have, for example, YouTube enabled, okay, if I am watching a video, if I minimize it, that video basically gets paused. Okay, so if I'm watching a video, this video has started, but if I minimize it, the app gets minimized. If I click the home button, it's in a pause state now. Once it's in a pause state, the app is still in the background, but it's in a pause state. जब इसको फिर मैंने मल्टीटास्किंग इनेबल की, मैंने ऐप पे इनेबल किया, ये वहीं से दोबारा से रनिंग स्टेट में आ गया। ठीक है, वीडियो वहीं से कंटिन्यू हो गई। तो फ्रॉम पॉज वी गो बैक टू रिज्यूम स्टेट। देन अगेन we have something called onStop. onStop basically means that I do a multitasking and then I close this app. Once I close this app, okay, I swipe it, now the app is closed. This basically means the app has been closed, the activity is finished or being destroyed by the system. The app may be destroyed as well. Some apps are only stopped. For example, your Facebook, for example, your WhatsApp, for example, your Instagram, your Twitter, they require your system, they require that the apps be running in the background. Your phone app, your calendar app, your contacts app, we do not technically destroy them. But your mobile apps, your banking apps, sorry, apps like your banks, your games, or certain other apps, they have an on destroy method as well. So that as soon as you swipe them and you close the app, okay, so as soon as I close the app, their on destroy method gets executed. They are basically, all the processes are killed, their methods, their functions, their activities, notifications, all are taken off the memory. Hence, they are in no longer running state. They are completely shut down. Certain banks do require that your apps do not run at the background, okay, for a security purpose, obviously. Okay. So we have that method available. So at certain point we do on stop, at certain point we do something called on destroy. So I hope this becomes clear that now when we run these apps, we have a different stages in which we try to understand how my app is basically running. Okay, and what are the various stages of my apps from on create, on start, on resumes. Okay, so if all the concept is clear till this particular point, we would begin and we will do a simple demo and we will see all these stages in a live class. Okay, so what we do is we will now go and we will develop a very simple application in which we will try to get a simple a log message and see all these stages
that जब हम इसको execute करने बैठे तो कहाँ पे which stage this methods are executed. Okay, so now let's go back into the next class.